In this video, we are going to start the new chapter, that is excretory products and their elimination. And the first topic from this chapter is removal of nitrogenous waste. इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इंट्रोडक्टरी एंड फोकसिंग ऑन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज द एक्सक्रीशन. अब देखो क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म और परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी आउट करने के बाद these organisms accumulate nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, some ions like sodium, chloride, sulfate, phosphate, etc. These should be accumulated in their body as a result of their metabolism. These substances should not be accumulated or should not be stored in the body. That should be thrown out. That should be removed out. एंड इनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन. सो इस चैप्टर में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन बीइंग एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स यही लर्न करें. तो क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या एक्यूमुलेट होता है उससे, एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया. मतलब different organisms produce the nitrogenous waste in different forms. We are collecting together. Ammonia may be in the form of urea, may be in the form of uric acid, maybe CO2, maybe water, some ions like sodium, chloride, sulfate, phosphate. These all things, mostly ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, ions like sodium, chloride, sulfate, phosphate is accumulated in the body as a result of metabolic activities. And अगर ये हम बॉडी में accumulate होता है तो that is dangerous. इसलिए these substances should be thrown out. Right. So we'll learn how we give more focus on the removal of nitrogenous waste only. Right. So that is what the second one is, removal of nitrogenous waste. So majority of the organisms जो भी है, majority of the organism remove nitrogenous waste in three forms: ammonia, urea, or uric acid. So majority of the organisms remove nitrogenous waste in three major forms. Number one, कौन सा? First one is ammonia. Second one is urea, and third one is uric acid. तीनों में से एक. So most of the organism remove nitrogenous waste either in the form of ammonia और यूरिया और यूरिक एसिड. ये कौन डिपेंड करता है? इट डिपेंड, टू थिंग्स डिसाइड करते हैं. वन इज वो कहाँ रहते हैं, ऑर्गेनिज्म वेयर दे आर लिविंग, दैट इज द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एंड सेकंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ दो चीजें, कहाँ रहते हैं और वहां जहां रहते हैं उसी हैबिटेट में वाटर का अवेलेबिलिटी कैसा है, दैट डिसाइड्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन अमोनिया और इन यूरिया और इन यूरिक एसिड. अब फर्स्ट वाला अमोनिया जो है, दिस इज हाईली टॉक्सिक. कैसा है? हाईली टॉक्सिक एंड रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. रिक्वायर्ड large, ज्यादा, large quantity of water.
quantity of water. Two points regarding ammonia. Ammonia is highly toxic or most toxic, right? And require large quantity of water for its elimination. बॉडी में के बाहर अगर उसे निकालना है तो उसके लिए वाटर का क्वांटिटी ज्यादा लगता है, राइट? दिस इज टू पॉइंट्स. अब देखो द प्रोसेस मतलब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, that is the process of removal of nitrogenous waste in the form of ammonia, and उस प्रोसेस को कहते हैं अमीनोटेलिज्म और अमोनोटेलिज्म, एंड उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म और अमोनोटेलिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ the process of removal of nitrogenous waste in the form of ammonia. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? That process is known as ammonotelism. Very simple. Ammonotelism. उसे क्या कहते हैं? Ammonotelism. And an organism is known as ammoniotelic organism. Ammoniotelic organism. उसे क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज फर्स्ट अमोनोटेलिज्म और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. अमोनोटेलिज्म और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? दे रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन इट्स बॉडी. उनके बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं अमोनोटेलिज्म. एंड द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म. अब मोस्ट इंपोर्टेंट कि इनके एग्जांपल क्या है? व्हिच आर द एग्जांपल्स ऑफ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल कौन से हैं? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कौन से हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के? नंबर वन बोनी फिशेस. Bony fishes. One. Second, aquatic amphibians. कौन से? Aquatic amphibians. Aquatic insects. Aquatic insects. कैसे हैं? These are ammoniotelic. These are show the ammonotelism. They remove nitrogenous waste in the form of ammonia. Right? Yes, sir. They remove nitrogenous waste in the form of ammonia. कितने एग्जाम्पल हैं? कौन से? बोली फिशेस, aquatic amphibians, and aquatic insects. These are the examples. Right? अब second one is urea. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे मैंने कहा कि कंसीडरिंग द हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, तो दे स्विच. उन लोगों ने क्या किया? जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग तो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया फर्स्ट प्रोड्यूस होता है इन ह्यूमन बीइंग्स. फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन अमोनिया. इट इज कन्वर्टेड इट इनटू यूरिया बाय लीवर. कौन कन्वर्ट करता है? लीवर. And then this urea is transported it into the blood. Blood में transport होता है. And through kidney it is excreted out. It is excreted out. कौन करता है? Kidney. This is in human being. मतलब in human being जो metabolic activity से अमोनिया प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और उसको रिमूव करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर लगता है, तो उतना शायद हमारे पास नहीं है, इसलिए वो स्विच हम लोगों ने क्या किया कि ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट द अमोनिया इट इनटू द लिवर, कन्वर्टेड इट इनटू द यूरिया बाय लिवर एंड देन रिलीज इट इनटू द ब्लड एंड थ्रू ब्लड इट रीच टू द किडनी. किडनी उसका फिल्ट्रेशन करती है एंड फाइनली यूरिया इज एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन. दैट इज द मैकेनिज्म इन आवर बॉडी. तो अब यूरिया, दिस इज द प्रोसेस. ये प्रोसेस है. अब यूरिया जो है
The process of removal of nitrogenous waste in the form of अगर यूरिया है तो उसे क्या कहेंगे? We call it as ureotelism. And the organism which show ureotelism are called as ureotelic organism. इसे क्या कहेंगे? Ureotelic organisms. Examples कौन से हैं कि the organism which excrete nitrogenous waste in the form of urea. कौन से? First, mammals. Second, terrestrial, amphibians and marine fishes. Terrestrial, amphibians and marine fishes. यहाँ पे terrestrial, amphibians, aquatic, terrestrial amphibians, bony fishes, marine fishes. क्या है? So कौन से example है? Three examples. We, mammals, first. Second, terrestrial amphibians, land में रहने वाले. And third, marine fishes. These show the ureotelism or ureotelic organisms. So यहाँ पे मैं example लिखता हूँ. उस पे बहुत बार कंपैरेटिव क्वेश्चंस बनते हैं. फर्स्ट इज मैमल्स. कौन है? मैमल्स. सेकंड एग्जांपल कौन सा है? एक्वाटिक एम्फिबियंस की जगह टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस, राइट? एंड देन थर्ड एग्जांपल मरीन फिशेस. कौन से? मरीन फिशेस. ये क्या करते हैं? These remove nitrogenous waste in the form of urea. And urea is lesser toxic as compared to ammonia. Ammonia is lesser toxic. Then third one is uric acid. अब uric acid is least toxic. सबसे least toxic. Uric acid is least toxic. Ammonia is most toxic or highly toxic. Ammonia required large quantity of water. It required less water for its removal, right? And the organism which release nitrogenous waste in the form of uric acid is known as ureotelism. इसे क्या कहते हैं? Is called as ureotelism. And उस organism को क्या कहेंगे? Organism is termed as ureotelic organism. Ureotelic organism. So third कौन सा? uric acid. Uric acid is least toxic and required less quantity of water for its elimination. इसके opposite first ammonia. Ammonia is highly toxic and required high quantity of water for its elimination. So the organism which remove uric acid, ureotelism or ureotelic organisms, right? अब देखिए, these organisms remove uric acid in the form of pellet. कौन से फॉर्म में? In the form of pellet or in the form of pellet. कैसे रिमूव करते हैं? In the form of pellet or crystals. Crystal or pellet and required low quantity of water. कौन से एग्जांपल्स है कि these organisms show the ureotelism or these are ureotelic examples. यहाँ पे लिखूंगा. कौन से? नंबर 1, reptiles. Second, birds. Reptiles, birds. Third, land snails. And fourth, insects. So these are the organisms which remove nitrogenous waste in the form of uric acid, and that uric acid in the form of the pellet or crystals. So these are what the major nitrogenous waste produced: ammonia, urea, and uric acid. And depending on that, ammonotelism, ureotelism, ureotelism. Ammonotelic, ureotelic, ureotelic. Examples: bony fishes, aquatic amphibians, and aquatic insects. Ammonia removal. Mammals, terrestrial amphibians, marine fishes. Urea as a nitrogenous waste remove करते हैं. Reptiles, birds, land snail, insect.
यूरिक एसिड रिमूव करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ pellet or crystals. And these are on what basis? These are depending on the habitat, कहाँ रहते हैं, and in that habitat availability of the water. Right? So this is all about the removal of nitrogenous waste. In the next video, we'll describe the excretory structures present in different organisms.